guys, welcome to this session. Today we are going to discuss 35 plus MCQs on center-state relation in Indian polity. This session having the question from easy to hard level. So for whatever exam you are preparing, these questions will definitely help you a lot in your examination. So watch the complete session guys, and if anyone is visiting the channel for the first time, so please subscribe the channel and don't forget to press the bell icon also. So let us start our session with the first question. Question is Article 245 to 255 deal with. Your A option is legislative relation between the center and the states, B option is administrative relation between the center and the states, and C option is financial relation between the center and the states, and last option is governor power. So right answer option A, that is legislative relation between the center and the states defined under Article 245 to 255. तो अगर हम बात करें सेंट्रल स्टेट रिलेशन की वो कितने तरह के होते हैं. सो दीज आर द थ्री टाइप्स, दैट इज लेजिस्लेटिव रिलेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन एंड फाइनेंशियल रिलेशन, राइट. और अगर हम आर्टिकल की बात करें, सो दीज रिलेशन दैट इज लेजिस्लेटिव रिलेशन आर डिफाइंड अंडर आर्टिकल 245 टू 255 एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस के साथ जो आर्टिकल डील्स करते हैं वो है आर्टिकल 256 टू आर्टिकल 267. और जो फाइनेंशियल रिलेशन है वो डिफाइंड हुए हैं अंडर आर्टिकल 268 टू आर्टिकल 293, राइट. आपको मोस्टली एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा फ्रॉम द लेजिस्लेटिव रिलेशन के ऊपर, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लेजिस्लेटिव रिलेशंस बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट्स आर गिवन. योर ए ऑप्शन इज पार्ट 10th, बी ऑप्शन इज पार्ट 11th, सी ऑप्शन इज पार्ट 12 एंड डी ऑप्शन इज पार्ट 13. So the right answer will be option B, that is part 11. Next question is, Indian Constitution presents three lists for the distribution of power between the center and the states. Which two articles regulate that distribution? Your A option is Article 4 and 5, B is Article 56 and 57, C option is Article 141 and 142, and last option is Article 245 and 246. तो यहाँ पर बात की जा रही है दैट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स जो है वो की जाती है थ्री लिस्ट के थ्रू. वो तीन लिस्ट कौन सी हैं? सो वो है यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट. तो कौन से जो है आर्टिकल रेगुलेट करते हैं उन डिस्ट्रीब्यूशंस को? सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी, दैट इज आर्टिकल 245 एंड आर्टिकल 246. योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट comes under the central government. Your A option is banking, B option is agriculture, C option is prison and D option is public health. Then under central government means जो कि जो है यूनियन लिस्ट में आते हैं, राइट. योर राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए, दैट इज बैंकिंग. अब यहाँ पर देखिए जो यूनियन लिस्ट है उसमें जो है कितने सब्जेक्ट आते हैं? टोटल 100 सब्जेक्ट, राइट. कुछ इंपॉर्टेंट वन देखिए जैसे कि फॉर एग्जांपल डिफेंस, बैंकिंग, करेंसी, एटॉमिक एनर्जी, इंश्योरेंस एंड टेलीकम्युनिकेशन एटसेट्रा. ये सारे आते हैं अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी टॉपिक्स आर करंटली कवर्ड इन द कंकरेंट लिस्ट. योर ए ऑप्शन इज 100, बी इज 57, सी ऑप्शन इज 61 एंड डी ऑप्शन इज 52. So the right answer will be option D, that is 52. अगर हम एट प्रेजेंट की बात करें सो देयर आर 52 सब्जेक्ट्स इन द कंकरेंट लिस्ट. अगर ओरिजिनली बात करें सो देयर वर 47 सब्जेक्ट. कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट विच आर अंडर द कंकरेंट लिस्ट वो है पॉपुलेशन, मैरिज, डाइवोर्स, ड्रग्स, न्यूज़पेपर, बुक्स, प्रिंटिंग प्रेस एटसेट्रा. Let me move further. Next question is how many subjects are listed in the state list. Your A option is 100, B is 97, C option is 66 and D option is 61. So right answer is option D, that is 61. और अगर ओरिजिनली बात करें सो स्टेट लिस्ट में टोटल कितने सब्जेक्ट थे? 66. जो अभी रिसेंट में जो है 5 सब्जेक्ट्स जो हैं उनको मूव किया गया है स्टेट लिस्ट से कंकरेंट लिस्ट के अंडर. अभी हम उनको आगे देखेंगे क्वेश्चन में. तो यहाँ पर आप देखिए कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट मैंने मेंशन किए हुए हैं जो आते हैं स्टेट लिस्ट के अंदर. तो वो है पब्लिक ऑर्डर, पुलिस, public health and sanitation, hospitals and dispensaries, betting and gambling, and fisheries, etc. Next question is which of the following subjects was not transferred from the state list to the concurrent list by the 42nd Constitutional Amendment Act? Your A option is education, B is public administration, C option is forest, and D option is weights and measures. So the right answer is option B, that is public administration. स्टेट लिस्ट में एट प्रेजेंट जो है टोटल 61 सब्जेक्ट हैं. उसमें रिसेंटली ओरिजिनली जो है 66 सब्जेक्ट थे.
उसमें से जो है 5 सब्जेक्ट को शिफ्ट किया गया है कंकरेंट लिस्ट में। सो कंकरेंट लिस्ट में अभी कितने सब्जेक्ट हैं? 52 सब्जेक्ट, और कंकरेंट लिस्ट में ओरिजिनली कितने थे? 47, राइट। तो यहाँ पर आप वो 5 सब्जेक्ट आपको याद रखने हैं जिनको मूव किया गया है बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। वो 5 सब्जेक्ट कौन कौन से हैं? एजुकेशन, फॉरेस्ट, weights and measures, protection of wild animals and birds, and last is administration of justice. Next question is Article 249 of the Indian Constitution deals with, your A option is emergency power of the President, B option is dissolution of the Lok Sabha, C option is administrative power of the Parliament, and D option is legislative powers of the Parliament with respect to matter in the state list. So right answer is option D, that is Article 249 deals with the legislative powers of the Parliament with respect to matters in the state list. Next question is, as a resolution passed under clause 1 of Article 249 shall remain in force for a period not exceeding. A option is 1 month, B is 3 months, C option is 6 months, and D option is 1 year. So right answer is option D, that is 1 year. Next question is, the financial relations between the Union government and state government have been discussed under. Your A option is Article 168 to 171, B option is Article 268 to 281, C option is Article 278 to 291, and last option is Article 289 to 295. तो हमने प्रीवियस देखा कि रिलेशंस 3 तरह के होते हैं, लेजिस्लेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल। जो फाइनेंशियल रिलेशन है वो डिफाइंड हुए हैं फ्रॉम द आर्टिकल 268 to 281. Next question is, which part of the Constitution of India describes the financial relation between the center and the state? Your A option is part 10th, B is part 11, C option is part 12, and D option is part 13. So the right answer is option C, that is part 12. और अगर हम बात करें लेजिस्लेटिव रिलेशन की तो वो डिफाइंड है अंडर पार्ट 11, राइट। Next question is, under which article of the Constitution of India taxes are levied and collected by the center but distributed between the center and the state? Your A option is Article 268, B is Article 269, C option is Article 270, and D option is Article 271. So right answer is option C, that is Article 270. यहाँ पर मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है मेंशन किए हुए हैं। अब फर्स्ट वन देखिए, द टैक्सेस विच आर लिवाइड बाय द सेंटर बट कलेक्टेड बाय द स्टेट्स। उन टैक्सेस को डिफाइन किया गया है अंडर आर्टिकल 268। और नेक्स्ट वन इज द आर्टिकल 269 डील्स विद द टैक्सेस विच आर लिवाइड एंड द कलेक्टेड बाय द सेंटर बट आर असाइन टू द स्टेट्स। एंड द लास्ट पॉइंट इज आर्टिकल 270 जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया, दैट दीज टैक्सेस आर लिवाइड एंड कलेक्टेड बाय द सेंटर बट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द सेंटर एंड द स्टेट्स, राइट। Next question is, which of the constitutional provision lays down that taxes can neither be levied nor collected without the authority of law? A option is Article 265, B is Article 266, C option is Article 300, and D option is Article 368. So right answer is option A, that is Article 265. Next question is, which of the following taxes is or are levied, collected and kept by the state government? Your first tax is land tax, second one is the octroi tax, and third one is the agriculture income tax. So you have to choose the correct taxes which are collected and kept by the state government. So all these three taxes are levied, collected and kept by the state government. Next question is, subjects on which the center and the state both can make law are mentioned in which of the following list? Your A option is union list, B is state list, C option is concurrent list, and D option is residual list. So the answer will be option C, that is concurrent list. Next question is, the relation of center state lies in which of the following schedule? Your A option is 7th, B option is 8th schedule, C option is 6th schedule, and D option is 9th schedule. So right answer is option A, that is center state relation are defined under the 7th schedule of the Constitution. Next question is, who is vested with the residuary powers in the Indian Constitution? A option is President, B is State Government, C option is Central Cabinet, and D option is Parliament. So right answer is option D, that is Parliament. Next question is, the Indian Constitution vests the residuary power with. A option is the Union Government, B is State Government, C is both the Union as well as the State Government, and D option is neither the Union nor the State Government. तो प्रीवियस क्वेश्चन भी सेम था, ये भी सेम है। यहाँ पर ऑप्शन थोड़ा सा बस वे ऑफ आस्क द क्वेश्चन इज डिफरेंट, राइट। सो आंसर राइट आंसर आएगा ऑप्शन ए, दैट इज यूनियन गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच रिस्पेक्ट हैव द सेंटर स्टेट रिलेशंस बीन स्पेसिफिकली
termed as municipal relation. A option is central control of the state in legislative sphere. B option is central control of the state in financial manner. C option is center's control of the state in the administrative sector. And D option is center's control of the state in the planning process. So the right answer is option B, that is center's control of the state in financial matter. Next question is, which one of the following articles of Indian Constitution provides that it shall be the duty of the Union to protect every state against external aggression and internal disturbance? ये क्वेश्चन जो है हम इमरजेंसी प्रोविजन वाले सेशन में भी कर चुके हैं, सो आई होप कि आपको इसका राइट आंसर पता होगा. सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी, दैट इज आर्टिकल 355. Next question is, which of the following institutes are considered necessary to promote unity among diversity in the Indian federalism? A option is Interstate Council and National Development Council. B option is Finance Commission and Regional Council. And C option is Unitary Judicial System and All India Services. And D option is all of the above. So right answer is option D, that is all of the above. Next question is, which article among the following says that Indian Constitution provides about interstate relation? A option is Article 262, B option is Article 263, C option is Article 264, and last option is Article 265. So right answer is option B, that is Article 263. Next question is, which of the following article empowers the establishment of the Interstate Council by the President? A option is Article 362, B is Article 364, C option is Article 263, and last is Article 262. So the right answer is option C, that is Article 263. Here I mentioned that Interstate Council can be established to investigate and discuss the common interest between the center and the state. Next question is, what is the source of Interstate Council? A option is Constitution, B is parliamentary laws, C option is recommendation of Planning Commission, and D option is approved resolution by CM. So right answer is option A, that is Constitution. Next question is, which one of the following is not a feature of zonal council? A option is it is a constitutional body. B option is 5 zonal councils have been set up under the State Reorganization Act 1956. C option is Chandigarh, although not a state, is included in the zonal council. And D option is it is an advisory body. So you have to choose the incorrect statement. So right answer is option A, that is zonal council is not a constitutional body, but zonal council जो है एक advisory body और statutory body होती है. Here I mentioned some important points about the zonal council. So zonal council are the statutory bodies and they are established by an act of parliament, that is State Reorganization Act 1956. इसके थ्रू जो है इंडिया को 5 जोन में डिवाइड किया गया है और हर एक जोन के लिए जो है एक जोनल काउंसिल बनाई गई है. वो 5 जोन कौन कौन से हैं? नॉर्थर्न, सेंट्रल, ईस्टर्न, वेस्टर्न एंड साउदर्न. अगर और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जो नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल है उसको एक डिफरेंट पार्लियामेंट एक्ट के थ्रू क्रिएट किया गया है, वो है नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एक्ट ऑफ 1971. सो अगर हम एट प्रेजेंट बात करें, सो टोटल जो जोनल काउंसिल इंडिया में है वो है 6, राइट. Next question is, which of the following is not matched properly? A option is Union Parliament power of adjudication in interstate water dispute in Article 262. B is Interstate Water Dispute Act 1956. C option is River Board Act is in year 1970. And D option is National Water Policy को लाया गया था in the year 1987. So you have to find out the incorrect pair. So right answer will be option C, that is River Boards Act वो लाया गया था इन द ईयर 1956, राइट, नॉट इन द ईयर 1970. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रीजनल काउंसिल्स आर कॉन्स्टिट्यूटेड बाय. अगर एक डिस्ट्रिक्ट लेवल की बात करें तो वहां पर जो है रीजनल काउंसिल बनाई जाती हैं. सो योर ए ऑप्शन इज कॉन्स्टिट्यूशन, बी इज पार्लियामेंट्री लॉज, सी ऑप्शन इज रिजोल्यूशन ऑफ गवर्नमेंट, एंड डी ऑप्शन इज नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज पार्लियामेंट्री लॉज. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु अमंग द फॉलोइंग इज empowered to establish the interstate council? इसके पास पावर होती है टू फॉर्म द इंटरस्टेट, और अगर हम बात करें जोनल काउंसिल की, उनको स्थापित करने की, तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन बी, दैट इज प्रेसिडेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रिकमेंडेशन ऑफ द सरकारिया कमीशन आर रिलेटेड टू. योर ए ऑप्शन इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू, बी ऑप्शन इज पावर्स एंड फंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, सी ऑप्शन इज मेंबरशिप ऑफ द पार्लियामेंट, डी ऑप्शन इज सेंटर स्टेट रिलेशन. The right answer is option D, that is Sarkaria Commission is related to central-state relation. Next question is, which commission advocated the establishment of a permanent interstate council called Intergovernment Council? A option is Panchi Commission, B is Sarkaria Commission, C option is Radhakrishnan Commission, and D option is Moily Commission. So right answer is option B, that is Sarkaria Commission.
Next question is, which one of the following is not related to union state relations in India? A option is Sarkaria Commission, B option is Rajmanar Commission, C option is Indrajit Gupta Committee, and D option is Panchi Commission. So right answer is option C, that is Indrajit Gupta Committee. Next question is agriculture. Income tax is assigned to the state government by A option is the Finance Commission, B is the National Development Council, C option is the Interstate Council, and D option is the Constitution of India. So right answer will be option D, that is the Constitution of India. Next question is, which one of the following taxes is imposed and charged by the union but is divided into the union and the state? A option is corporation tax, B option is taxes on items except for agriculture income, C option is taxes on railway fares and freights, and D option is custom. So right answer will be option B, that is taxes on items except for agriculture income. Next question is, the center-state relation in India are influenced by. First one is the provisions of the constitution, second is the planning process, C option is conflict of political interest, and fourth one is the dominance of desire to dictate. Right answer is option D, that is all three are responsible to influence the center-state relation. Here guys I mentioned some important points, so you can pause the video and watch it out. वैसे इन सारे points को हम approximately cover ही कर चुके हैं in the form of MCQs. बट अगर आपको कुछ मिसिंग रहा हो, सो प्लीज आप वीडियो को पॉज करके यहाँ से रीड आउट कर सकते हो, राइट? So that's it for today guys. I hope that you love the session. Please give a one thumbs up to video. We will meet soon in the next session. Till then, bye bye and take care.